In my previous video, I shared that how aldehyde and ketones give the nucleophilic addition reaction. उसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन है, that is the chemical property of aldehydes. How aldehydes, if they are having at least one alpha hydrogen, will give us aldol. And what is aldol and what is aldol condensation? So let's see what is the aldol. So aldol क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है aldol. ald means aldehyde. ald का मतलब क्या है यहाँ पे, aldehyde. And ol means alcohol. So how the aldehydes, because of the nucleophilic addition reaction, give us a aldol reaction and aldol condensation. So aldehyde जिसे हम normally R and CO इस तरह से draw करते हैं. In the अगर हम यहाँ पे लेते हैं सिंपल मीडियम, we can say KOH और NaOH, हम एक माइल्ड बेस यहाँ पे ले रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन, व्हाट जो हमारा एल्डिहाइड है, इट विल गिव अस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. इस फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं एल्डोल. एंड फर्दर इफ वी आर हीटिंग दिस, अगर हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करते हैं, वी आर गेटिंग दी एल्कीन aldehydes are giving number of chemical reaction, and aldol is one of its chemical reaction. And if the aldehydes are having at least one alpha hydrogen in the presence of alkali, NaOH or KOH, it will give aldol. And further heating of that aldol will give us alkene with the aldehyde. So it will have a double bond plus the aldehyde. So let's see what is the aldol, which is the one of the chemical property of the aldehydes. Aldehyde having a journal formula R, CO and H. aldehyde को अगर हम लोग, we can write also like this. If it is reacted in the presence of dilute alkali, NaOH or KOH, then what will happen? This aldehyde must have alpha hydrogen. This reaction is given by only those aldehydes में alpha hydrogen हो. This alpha hydrogen is acidic in nature because carbonyl group जो है, it is electron taking or having a more electronegativity. It can take the electron, so it will release the hydrogen. So जब ये alpha hydrogen वहाँ से remove होगा, then हमें क्या मिलेगा? We are getting the aldol. So then we are getting beta hydroxy aldehyde. And further heating of this beta hydroxy aldehyde will give us aldol condensation, having double bond with the aldehyde group. Aldol condensation. So let's see with the example. हम यहाँ पे ये aldehyde ले लिया है, एक साइड पे हमने
CH3 लगा दिया है and one side we are having the H because we must have the alpha hydrogen. Alpha the carbon which is adjacent to the carbonyl carbon. तो यहाँ पे हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे and in the presence of dilute NaOH we are having then टोटल हमारे पास मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो 4 कार्बन हो गए हैं तो 1 कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे तो हम एल्डिहाइड ग्रुप वैसे ही लगा देंगे एंड एज आई रोट बीटा तो अल्फा एंड बीटा दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा बट वी हैव टू ऐड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बीटा सो हम यहाँ पे इस पे जो बीटा है उस पे लगाएंगे सो व्हाट शुड बी देयर यहाँ पे हम लोग OH एंड द रेस्ट वी कैन सी हम यहाँ पे इस तरह से फुलफिल कर लेंगे दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर इसका IPAC नेम हमें लिखना हो तो 1 2 3 4 थर्ड पे है दैट इज दी अगर हम देखें इस पे थर्ड कार्बन पे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो थर्ड जो है दैट इज 3 हाइड्रोक्सी क्या बन गया है यहाँ पे ब्यूटेनॉल तो यहाँ दिस इज दी एल्डोल एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है एल्डोल का मतलब ही है कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल फर्दर अगर हम इसका हीटिंग करते हैं दिस अल्डोल को हम हीट करते हैं वी हैव टू रिमूव दी वन वाटर मॉलिक्यूल हम इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर लेंगे एंड वो यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा दी अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन कम आउट एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज दी CH3 CH double bond C and COH and यहाँ पे H. So by this we are having this product is known as aldol condensation. This is the condensation where we removed the one water molecule. So when we are treating the aldehyde which are having at least one alpha hydrogen which is acidic in nature in the presence of dilute NaOH or KH we are getting beta hydroxy जो बीटा है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा and this is known as aldol and when we are heating this aldol in the we are heating then we are removing one water molecule and we are getting a double bond along with the aldehyde group and this product is known as aldol condensation. Similarly we can prepare for the other aldehydes हम यहाँ पे एक और aldehyde ले लेते हैं that is C2H5 and C double bond H. So यहाँ पे हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे and same dilute NaOH या KOH के साथ हम इसे ट्रीट करेंगे टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ये 2 और ये 6 हो जाएंगे then what we how we write 1 2 3 4 5 and 6 तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे एंड एज आई सेड यहाँ पे तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ही H H and H H H H and as usual we are balancing all the carbon and ये एल्डोल हमारे पास बन गया है फर्दर अगर हम इसे हीट करते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल कैन कम आउट हीटिंग के बाद वी आर गेटिंग दैट इज a double bonded so 1 2 3 4 5 6 and this one happened between the second and third तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड एज यूजुअल यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा बैलेंस ही यहाँ पे ना छोड़ के क्योंकि हमने यहीं से अभी रिमूव किया है H एंड
So this is aldol condensation, this is aldol. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें.